Good morning, students. Welcome to social science class. How are you all? Hope you all are fine. Students, we are studying chapter 18, the Union Government, the Legislature. In this chapter, we have discussed about the different levels of government. There is a government on the central level, then the state level government, and third is grassroots level government, that is called local self government. Yes, union government or the central government at the central level, state government for the proper functioning in the states, and local government for the proper work in the villages and the cities. Okay, and in local government we includes municipalities and panchayat. Okay, so these are the three levels of government. Now, further, we have divided the union government into three parts: the legislature, executive, and judiciary. Legislature consists of President, Lok Sabha, and Rajya Sabha. Executive consists of President, Vice President, Cabinet Ministers, Prime Minister, and other ministers. And judiciary, it consists of Supreme Court of India. We have already discussed about all these parts of the government. What are the working of these parts? Legislature's responsibility to make law. What is the main duty of the legislature? To make law. This is the main work or main duty of the legislature. Executive works for the implementation of the law. जो लॉज लेजिस्लेचर फॉर्म करता है, बनाता है, उनकी इम्प्लीमेंटेशन, उनको वर्किंग में लेकर आना, टू इम्प्लीमेंट दोज लॉज, इट इज द ड्यूटी ऑफ executive. And judiciary works to solve the conflict between executive and legislature, to check whether the laws are according to constitution or not. Okay, and other public related matters or conflicts. जुडिशरी का क्या वर्क है? ये चेक करना कि लोगों कि क्या कन्फ्लिक्ट्स हैं, उनके ऊपर डिसीजन देना. लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव की कोई प्रॉब्लम्स हैं, कोई कन्फ्लिक्ट्स हैं, उनको सॉल्व करना. एंड चेक करना कि वेदर द लॉ इज अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट. लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है या नहीं है, ये भी जुडिशरी का वर्क है चेक करना. ओके, सो दीज आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ लेजिस्लेचर, executive and judiciary. Okay, now there is the distribution between of the powers between state government and the union government. स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट के बीच में पावर्स डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं to remove the conflicts. Okay, to remove the conflicts over the powers, our constitution distribute powers between the state government and the central government. Let's read about it from the book first. To ensure that the union and the state government have a definite jurisdiction of legislative powers without any conflict of overlapping of functioning, the makers of our constitution
enumerated and divided all the subjects on which laws could be made into 3 lists. ये श्योर करने के लिए कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स पर कौन लॉ फॉर्म करेगा. Our constitution makers divided the subjects into 3 lists. यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के कन्फ्लिक्ट्स को हटाने के लिए, वहाँ की ओवरलैपिंग को रिमूव करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने लॉज के सब्जेक्ट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया. द फर्स्ट वन इज यूनियन लिस्ट, state list, then concurrent list. Union list, as the name shows, all the subjects that are of national importance are included in union list. जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं जो पूरी नेशन के लिए, पूरी कंट्री के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, नेशनल इम्पॉर्टेंस के जितने भी टॉपिक्स हैं, ऑल दीज टॉपिक्स आर द पार्ट ऑफ यूनियन लिस्ट. एंड देयर आर टोटल 97 सब्जेक्ट्स. 97 ऐसे टॉपिक्स हैं जो यूनियन लिस्ट में इंक्लूड किए गए हैं. एंड ऑल दीज टॉपिक्स आर ऑफ नेशनल इंटरेस्ट. एंड हु कैन मेक द लॉज ऑन दीज? द यूनियन government, that is the parliament. Our parliament, Lok Sabha, can make the laws on it. Only the parliament has the exclusive power to legislate on them. Our parliament, that includes Lok Sabha and Rajya Sabha, it has the power to make laws on these subjects. Some of the subjects in union list are of defense, foreign affairs, war, peace, railway, post office, currency, foreign exchange, etc. These are the subjects of national interest. A state is not responsible for the foreign affairs or the defense. It is the responsibility of union government to make laws, because security of the whole country is the major subject. पूरी कंट्री की सिक्योरिटी बहुत बड़ा इशू है और a state cannot make laws on that. Just like foreign affairs. Foreign affairs means our relation with foreign countries. Which type of relation we have with our neighboring countries or with the other countries of the world. And who decide this? Our union government or the parliament. The decision about our currency is also taken by the parliament. So these are the subjects of national interest. ये सभी जो सब्जेक्ट्स हैं ये पूरी कंट्री को इन्फ्लुएंस करते हैं. इनमें ज़रा सा भी कोई चेंज है, अ लिटिल चेंज इन दीज सब्जेक्ट्स इन्फ्लुएंस द होल कंट्री. ओके, सो दीज सब्जेक्ट्स आर द पार्ट ऑफ यूनियन लिस्ट. नेक्स्ट इज स्टेट लिस्ट. State list contains 66 subjects. How many subjects? 66 subjects. And these are regarding police of the state, local government, public health,
and sanitation, agriculture, forest areas of the state. Okay, these are the subjects of state list, because these subjects are for the state and these are the states on issues. अपने खुद के issues हैं state के and state government can handle these. So in this public health and sanitation means एक state की जो public है उसकी health के लिए वहाँ पर जो cleanliness के लिए work कौन करेगा, laws कौन बनाएगा? It is the state government. For the agricultural work, who makes the law? State government, because the climatic condition, the landforms are different. Financial condition of a state is also different. So it is the duty of state government to form laws on agriculture field. Forest covers. A state government can make law on the subject forest cover. If state government feels that it has to reserve the forest area, it can. Okay, as much as it wants, it can do. So these are the some of the topics. Police works for maintaining the law and order in the state. So how to handle police or their incentives or salaries, these are the matter of the state government. But in certain circumstances, the parliament can also make laws on subject mentioned in state list. बट कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं, कुछ ऐसे कंडीशंस होती हैं जब यूनियन गवर्नमेंट भी स्टेट लिस्ट पर लॉज बना सकती है. अदरवाइज स्टेट लिस्ट पर कौन लॉज बनाता है? ओनली स्टेट गवर्नमेंट. बट कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं जब कुछ इम्पॉर्टेंट इश्यूज होते हैं या कोई ज़्यादा सेंसिटिव इश्यूज होते हैं तो वहाँ पर यूनियन गवर्नमेंट कैन मेक लॉज on the subjects those are mentioned in state list. उन पर यूनियन गवर्नमेंट भी जो पार्लियामेंट है वो भी लॉज बना सकती है. ओके, नाउ द लास्ट लिस्ट, दैट इज कंकरेंट लिस्ट. इट हैज 52 subjects. How many subjects? 52 subjects. 97 in union list, 66 in state list and 52 in concurrent list. And it includes the subjects like marriage, divorce, transfer of property other than agriculture land, adulteration of foodstuffs, drugs and medicines, labor welfares, etc. अब कौन से टॉपिक्स हैं इसमें? इट इंक्लूड्स द सब्जेक्ट्स ऑफ मैरिज, मैरिज पर्पसेस की, डाइवोर्स के मैटर्स, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने के मैटर्स अदर देन एग्रीकल्चर लैंड, कि वो प्रॉपर्टी मीन्स जो हाउस है या कोई और लैंड है, एग्रीकल्चरल लैंड नहीं होना चाहिए वो. ओके. एडल्ट्रेशन ऑफ फूड स्टफ, इट मीन्स जो हम खाने की चीज़ों में मिलावट करते हैं, दैट इज़ एडल्ट्रेशन ऑफ फूड स्टफ. मेडिसिन के रिगार्डिंग कोई लॉज बनाना है, ओके, और लेबर के वेलफेयर के लिए लॉ बनाना है. तो ये सब इस तरह के 52 लॉज आर इंक्लूडेड इन कंकरेंट लिस्ट. द पार्लियामेंट एज वेल एज स्टेट लेजिस्लेचर बोथ में make laws on the subject enlisted in concurrent list. Who can make the law on concurrent list? Parliament at the central level. जो हमारा legislature है parliament वो, और state legislature.
both may make laws on the subjects and listed in concurrent list. दोनों ही concurrent list में जो subjects add हैं उन पर laws form कर सकती हैं, बना सकती हैं. But in case on conflict, but if there is any problem or any conflict raised, then the central law prevails over the state law. अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिस पर, ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट दोनों ने लॉ बनाया है, then in this case the central law prevails over the state law. किसके लॉ को प्रेफरेंस दी जाएगी? यूनियन गवर्नमेंट ने जो, पार्लियामेंट ने जो लॉ बनाया है उसे ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा, उसे ही इम्प्लीमेंट किया जाएगा. ओके, नाउ दीज आर द थ्री लिस्ट. विच आर दीज? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड concurrent list. But there are some other important subjects. Those are not included in these three lists. So where are these? These subjects are included in the residuary subjects. These are called residuary subjects. And only Parliament can make laws on it. These are the subjects which are not included in union list, state list or concurrent list. So these are called residuary subjects and only Parliament can make laws on it. The subjects not included in the above mentioned three lists or any such matter which will arise with the passage of time comes under the center. क्यों ये include नहीं है उनमें? Because when our constitution maker wrote the constitution, at that time these topics or these subjects were not there. They arise with the passage of time. टाइम के साथ साथ, डेवलपमेंट के साथ साथ ये सब्जेक्ट्स, ये टॉपिक्स डेवलप हुए, ग्रो हुए. जस्ट लाइक इफ वी आर टॉकिंग अबाउट सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, तो इन 1947 देयर वर नो कंप्यूटर्स इन आवर कंट्री. तो ऐसा किसी ने सोचा ही नहीं था कि उस पर भी लॉ बनाना पड़ेगा, कोई वहाँ पर भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं. So, which topics or which subjects arise with the passage of time? Those comes under the center and the Parliament can make law on it. वो सेंटर के कंट्रोल में आ जाते हैं, यूनियन जो है हमारी गवर्नमेंट उसके कंट्रोल में आते हैं, और ओनली पार्लियामेंट कैन मेक लॉ ऑन इट. एंड दीज सब्जेक्ट्स आर कॉल्ड रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स लाइक computer software, hardware, e-commerce, information technologies. These are the examples of residuary subjects. Okay, so this is about the power distribution between the union and the state government. Union list, state list, concurrent list. This is the flow chart of three lists and you have to draw this flow chart. Okay. Union list has the subject of national importance. State list has the subject of local or state importance. Concurrent list has the subjects of common interest, both of center and state. Who can make laws? Union government can make laws on the union list, and it includes defense, banking, currency, foreign affairs and communication, etc.
On state list, only state government can make law, but in such circumstances, union government can also make law on state list. It includes police, trade, commerce, agriculture and irrigation. Now concurrent list, both the center and state can frame law, and it includes education, forest, trade, union, marriage, adoption and succession. These are the subjects included in concurrent list. Okay, so you have to make this type of flowchart in your notebooks. Okay, so I hope the topic is clear to you all. So that's it in this video. Thank you and have a nice day.